सी ए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। सो आज से मैं सी ए फाउंडेशन का अकाउंटिंग कोर्स स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर किसी को ज़रूरत है अकाउंटिंग कोर्स का, तो यू कैन शेयर माई वीडियोज़ लिंक टू दोज पर्सन्स। ओके, सो दैट दे कैन गेट फुल बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स। इसमें मैं पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल कवर करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर 1, दैट इज़ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। ओके, फर्स्ट यूनिट 1 इज़ मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। सो इसमें आपको मीनिंग वगैरह, आपको यूनिट ओवरव्यू वगैरह आप देख सकते हो स्टडी मटेरियल में। मैं मूव करती हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट में। इंट्रोडक्शन पार्ट में यह बताया गया है कि यहाँ पे कि एवरी इंडिविजुअल परफॉर्म्स सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, बी इट इंडिविजुअल पर्सन और बिजनेस। जो भी बंदे है या बंदी है, जो भी इंडिविजुअल है बिजनेस है, सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करते हैं टू अर्न सम मनी। ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज़। लाइक अभी कोई बिजनेस रहेगा, टेलीकॉम इंडस्ट्री रहेगा या स्टेशनरी बिजनेस रहेगा, तो वो लोग जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। ओके, सो दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूड्स ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। सो इन अ नटशेल, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन प्लस event. Transaction is used to mean a business, a performance of an act or an agreement. जो भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हो बिजनेस में, एक्टिविटीज़ ड्यूटीज़ करती हो, उसको हम ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। एंड इवेंट इज एंड रिजल्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स। वो ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस बिजनेस में आता है या जो भी अमाउंट रहता है इन हैंड, उसको हम बोलते हैं एंड रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन, दैट इज इवेंट। ओके, सो economic activity includes transaction and event. So next, moving to example 1, here you can see an individual invests rupees 2 lakh for running a stationery business. On 1st January, he purchases goods for 1 lakh 15,000 and sells for 1 lakh 47,000. Purchased for 1 lakh 15,000 and sold for 1 lakh 47,000, तो profit में वो sell कर रहा है during the month of January. Okay, he pays shop rent also for 5,000 rupees and finds that still he has goods worth of 15,000 in hand. द इंडिविजुअल परफॉर्म्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो भी यहाँ पे परचेज सेल या शॉप रेंट पे करने का जो भी यहाँ पे ड्यूटी कर रहा है इंडिविजुअल, दिस इज कॉल्ड एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, ही कैरीज ऑन फ्यू ट्रांजेक्शंस एंड एनकाउंटर्स विद सम इवेंट। Is it not logical that he will want to know the result of this activity? Yeah, it's obviously he want to know his result of activity, और जो भी प्रॉफिट है या लॉस है, वो जो भी उसके बिजनेस में अकर हो रहा है वो जानना चाहेगा वो। सो वी सी दैट द इंडिविजुअल हु रन स्टेशनरी बिजनेस अर्न्स अ सरप्लस ऑफ 42,000। हाउ? सो गुड्स सोल्ड इज 1,47,000। गुड्स इन हैंड यहाँ पे मेंशन किया है, ही हैज़ गुड्स वर्थ ऑफ 15,000 इन हैंड। ओके, सो वो इस दोनों का टोटल होगा 1,62,000। उसमें से हम माइनस करेंगे जो भी एक्सपेंसेस हैं। उसने परचेस किया है गुड्स 1,15,000 का, वो माइनस करेंगे। एंड शॉप रेंट जो भी वो पे किया है फॉर द मंथ 5,000 रुपीज़, वो भी माइनस करेंगे। टोटल 1,20,000 माइनस करने के बाद जो सरप्लस अमाउंट है 42,000, दैट इज़ हिज प्रॉफिट। इट इज़ एन इवेंट। ओके, जो भी गुड्स सोल्ड हो रहा है या परचेस हो रहा है, दिस इज अ ट्रांजैक्शन। एंड जो भी सरप्लस या प्रॉफिट हो रहा है, दिस इज एन इवेंट। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन प्लस इवेंट। ओके, एंड जो भी यहाँ पे नॉट ओनली दिस सरप्लस इज एन इवेंट, बट गुड्स इन हैंड जो भी उसके बिजनेस में बच रहा है, अभी 15,000 का उस जो भी गुड्स है वो उसके बिजनेस में एट द एंड ऑफ द मंथ, वो क्लोजिंग डेट पे 15,000 का स्टॉक है उसके हैंड में। सो दैट 15,000 एंड सरप्लस प्रॉफिट ऑफ 42,000, दिस इज एन इवेंट। एंड जो गुड्स सोल्ड हुआ है एंड गुड्स परचेस्ड एंड शॉप रेंट पेड, दिस इज अ ट्रांजैक्शन। ओके, नाउ मूविंग टू, यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स पढ़ सकते हो, जैसे कि ये सिमिलर टू दिस एग्जाम्पल ओनली, they have given some few more examples here. So like similarly, a municipal corporation got government grant of 500 lakh for adult education. It spends 2 lakh 50,000 for purchasing literacy kits and paid 200 lakhs for the tutor and is left with a balance of 50 lakh. Okay, sorry, he spent 250 lakhs for purchasing kits. This is transaction. Paid 200 lakhs for the tutor, this is also a transaction. And whatever remains in his hand, that is 50 lakhs, this is a event. Okay, this is a result of a transaction, so this is a event.
Next, you can read all these simple examples hai. Next, coming to meaning of accounting. So here one more important thing is, this is a language of business. What is language of business? Accounting is the language of business. Because जो भी accounting या जो भी transaction and events business में अकर करता है या perform करते हैं individual या business owners, so they want to know their result, or they want to know what is happening in the business, okay, and they want to take the decision to grow their business, or to reduce their losses, or to increase their profits. So how can they know these transactions and events? Okay, for that purpose they need to maintain accounting. अकाउंटिंग जब मेंटेन करते हैं ना, अकाउंटिंग के थ्रू उनको पता चलता है कि उनके बिजनेस में क्या चल रहा है, और उनके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ. सो दिस इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. ओके, बिजनेस का जो भी डिसीजन मेकिंग लेने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी वो किसको देते हैं कि अकाउंटिंग ऑफ द बिजनेस. सो इसको अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहते हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव टू मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग. The Committee on Technology Terminology, set up by the American Institute of Certified Public Accountants, formulated the following definition of accounting in 1961. 1961 में जो accounting का definition उन्होंने दिया था CPA, वो है American Institute of CPA. Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions, and events which are in part at least of a financial character, and interpreting the result thereof. Okay, so यहाँ पे हम समझते हैं कि अकाउंटिंग क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग. रिकॉर्ड कीपिंग मतलब जो भी ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स बिजनेस में हो रहा है उसका हम रिकॉर्ड करते हैं एक बुक में. Okay, this is called as accounting. And also it is a art of classifying मतलब नेचर के हिसाब से जो भी वो ट्रांजेक्शन्स अकर हो रहा है उसके नेचर के हिसाब से हम अकाउंटिंग का क्लासीफाई करते हैं. इज इट अ इनकम, इज इट अ एक्सपेंस, और असेट है या लायबिलिटी है, इस काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन भी करते हैं. दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. एंड उसके बाद समराइज करते हैं. समराइज मतलब जो भी क्लासीफाई हुआ है वो बैलेंस इसका समराइजेशन करेंगे, और उसके बाद वो जो भी फिनेंशियल रिजल्ट आता है वो रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं. दिस इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग. सो अकाउंटिंग स्टार्ट्स विथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स and recording of that transactions and events in journals or subsidiary books. These are the primary books of accounting. Okay, सो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स. उसके बाद हम ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल्स में, एंड उसके बाद क्लासीफाई करेंगे, इनकम है या एक्सपेंस है या असेट है या लायबिलिटी है. उसके बाद जो भी क्लासिफिकेशन किया गया जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसको हम समराइज करेंगे इन अ लेजर बुक, टोटल उसका. ओके, उसके बाद समराइजेशन इन अ लेजर बुक. उसके बाद वो अमाउंट जो भी है वो ट्रांसफ़र करेंगे P&L अकाउंट या बैलेंस शीट में, सो दैट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हम प्रिपेयर करेंगे. फिनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के बाद हम एंड रिजल्ट को देख सकते हैं कि कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस इनकर किया है. दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, वही यहाँ पे मेंशन किया है. ओके, ये पैराग्राफ में जो भी है वही मेंशनड है, आप एक बार रीड कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट कमिंग टू दिस डेफिनेशन. ओके, 1966 में. सो 1961 में जो डेफिनेशन दिया था तब सिर्फ वहाँ पे क्या हुआ था कि एंड रिजल्ट जो भी है वो देखना ही अकाउंटिंग ऐसे वहाँ पे मेंशन हुआ था. अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे लिखा है कि फिनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, सिर्फ यहाँ तक की लिमिट था अकाउंटिंग का. ठीक है, बट इन 1966 जब मॉडर्न अकाउंटिंग आया या इंडस्ट्री में सिचुएशंस वगैरह मतलब चेंज हुई, तब डेफिनेशन में ऐड हुआ. दैट इज द अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजन बाय द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स. अकाउंटिंग इज नॉट ओनली लिमिटेड टू द identifying the results of the company, but it is also the process of communicating those results to shareholders to make like decisions which are in the interest of the stakeholders, or which are in the interest of the business. Okay, so accounting is also distributing, or accounting is also communicating the informed results of the company to the stakeholders. Okay, this is accounting definition.
So, in a nutshell, what is accounting? Accounting may be defined as the process of recording, classifying, summarizing, analyzing, and interpreting the financial transactions and communicating the results thereof to the persons interested in such information. Now coming to procedural aspect of accounting. On the basis of the above definition, procedures of accounting can be basically divided into two parts. First one is generating financial information and second one is using financial information. सो जनरेटिंग फिनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या क्या आता है? फर्स्ट आता है रिकॉर्डिंग, जो भी हम ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स रहते हैं उसको रिकॉर्ड करना, उसके बाद क्लासीफाइंग एंड उसके बाद समराइजिंग, उसके बाद एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, ओके, एंड कम्युनिकेटिंग. ऑल दिस कम्स अंडर generating financial information. And now let's see what comes under using the financial information. ठीक है, तो फर्स्ट विल सी वन बाय वन ऑफ जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. सो रिकॉर्डिंग में क्या आता है? दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग. All business transactions of a financial character, as evidenced by some documents such as sales bill, passbook, salary slip, etc., are recorded in the books of account. Recording is done in a book called journal. This book may be further divided into several subsidiary books according to the nature and size of the business. ओके, सो रिकॉर्डिंग में क्या क्या आता है कि जो भी बिजनेस एंड ट्रांजेक्शन्स आप आइडेंटिफाई करते हो थ्रू लाइक आपने परचेस किया है या गुड्स सेल किया है या एक्सपेंडिचर इनकर किया है, उसका जो भी ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड करते हैं एक जर्नल बुक में. उस इस पार्ट में वो फंक्शन आता है. दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज टू रिकॉर्ड कीपिंग. And next, coming to classifying. Classifying is concerned with the systematic analysis of recorded data with a view to group transactions or entries of one nature at one place so as to put information in compact and usable form. The book containing classified information is called ledger. लेजर में क्या करते हैं हम? जो भी जर्नल में ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड किया है उसको नेचर वाइज हम क्लासीफाई करते हैं एंड एक एक लेजर प्रिपेयर करके वो बैलेंस को लेजर में ट्रांसफर करते हैं. For example, there may be separate account heads of salaries, rent, printing and stationeries, advertisement, etc. All expenses under these heads, after being recorded in the journal, will be classified under the separate heads in the ledger. This will help in finding out the total expenditure incurred under each of the above heads. For example, अगर डेटर है या सैलरीज है, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द सैलरीज 10 एम्प्लॉयज़ है, 10 एम्प्लॉयज़ को हमने सैलरी पे किया 5,000, 10,000, 15,000 कुछ भी. ओके, सो जर्नल में क्या होगा? 10 लाइन आइटम क्रिएट होंगे कि हमने इनको सैलरी प्रोसेस किया. बट हम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल का एक एक लाइन तो नहीं देखते बैठते ना जब वो डिसीजन लेता है. तो उस वक्त क्या करते हैं हम? जो भी सैलरी नेचर का जो भी एक्सपेंडिचर है उसको सैलरी का एक लेजर क्रिएट करके जो जर्नल में रिकॉर्ड किया है उसका टोटल बैलेंस लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं, सो दैट एक ब्रीफ ओवरव्यू मिलता है, ओवरऑल ओवरव्यू मिलता है, जिससे स्टेक होल्डर को डिसीजन लेने में भी आसानी हो जाती है. सो फर्स्ट वन इज रिकॉर्डिंग एंड सेकेंड वन इज क्लासीफाइंग. I hope you understand this. And next one is summarizing. It is concerned with the preparation and presentation of classified data in a manner useful to the internal as well as external users of financial statement. This process leads to preparation of the financial statement. Summarizing में first क्या आता है प्रोसेस? प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट. लेजर के बाद जो भी अब अमाउंट बैलेंस रहता है ना उसका एक स्टेटमेंट बनाया जाता है. फिनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट है, पे एंड एल स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है. ओके, दीज थ्री मेन स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किया जाता है और जो भी लेजर में है अमाउंट है वो ट्रांसफ़र किया जाता है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में. दिस इज़ यूजफुल फॉर इंटरनल एज वेल एज external review. Okay, and next comes to analyzing. The term analysis means methodical classification of the data given in the financial statement. The figure given in the financial statement will not help anymore unless they are in a simplified form. For example, all items relating to fixed assets are put at one place while all items relating to current assets are put at another place. It is concerned with the establishment of relationship between the items of profit and loss account and the balance sheet. That is, it provides the basis for interpretation. ओके, एनालिसिस में क्या होता है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे एंड बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करेंगे. सो बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का एक मेन रीज़न ये है कि फिनेंशियल पोजीशन स्टेक होल्डर्स को या जो भी इंटरनल एम्प्लॉयज़ है, इंटरनल स्टेक होल्डर्स है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को जब डिसीजन लेना होगा या फिनेंशियल स्टेटमेंट, फिनेंशियल पोजीशन
अंडरस्टैंड करना होगा कंपनी का, तो तब बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट में एक आसान ये हो जाता है कि असेट का, फॉर एग्जांपल है तो फिक्स्ड असेट को हम एक जगह डिस्प्ले करेंगे एंड करंट असेट्स को एक जगह डिस्प्ले करेंगे। लाइकवाइज फॉर फिक्स करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। ओके, सो इससे एनालिसिस पार्ट इजी हो जाता है कि बिजनेस में हम इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं, या बिजनेस में फिक्स्ड असेट कितने का है, डेटर्स कितने का है, क्रेडिटर्स कितने का है, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट भी अर्न हो रहा है ना, वो हम बिजनेस के बैलेंस शीट में भी ट्रांसफर करेंगे। इससे हमें नेट अर्निंग कितना है, रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, ये सब चीज़ें लाइक एनालाइज करने में मदद होगी। सो नेक्स्ट फोर्थ स्टेप इज एनालाइजिंग, and fifth step is interpreting. This is the final function of accounting. It is concerned with explaining the meaning and significance of the relationship as established by the analysis of accounting data. जो भी एनालिसिस करते हैं उसको इंटरप्रेट करना या एक्सप्लेन करना रिजल्ट का, दिस इज कॉल्ड एज इंटरप्रेटिंग। Okay, next coming to communicating, it is concerned with the transmission of summarized, analyzed and interpreted information to the end users to enable them to make rational decisions. This is done through preparation and distribution of accounting reports, which includes, besides the usual profit and loss account and the balance sheet, additional information in the form of accounting ratios, graphs, डायग्राम्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट एक्सेट्रा। इसके बारे में नेक्स्ट हम जो आगे के चैप्टर पे आएंगे उसमें हम देखेंगे। एंड कम्युनिकेटिंग इज द लास्ट पार्ट। कम्युनिकेटिंग का मतलब जो भी एनालिसिस आपने किया है या जो भी आइडेंटिफाई किया है प्रॉफिट या लॉस या अगर बिजनेस परफॉर्मेंस के बारे में, उसको हम एंड यूज़र को कम्युनिकेट करेंगे थ्रू सम रिपोर्ट्स। ओके, तो अगर फिनेंशियल रेशियोज है, ग्राफ्स है, डायग्राम्स है या स्टेटमेंट्स है, उसके थ्रू हम एंड यूजर्स को वो कम्युनिकेट करेंगे। दिस इज द एंड ऑफ दिस प्रोसेस। So the first two procedural stages of the processing of generating financial information along with the preparation of trial balance are covered under the bookkeeping, while the preparation of financial statements and its analysis, interpretation and also its communication to the various users are considered as accounting stages. ओके, जो भी जर्नल है या ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन, लेजर अकाउंट जो भी है वो बुक कीपिंग के अंडर आता है, बाकी का रेस्ट ऑफ द प्रोसेसेस आर कंसिडर्ड एज अकाउंटिंग स्टेजेस। ओके, आई होप यू गॉट दिस प्रोसीजर। सो प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग में फर्स्ट कंप्लीट हो गया, दैट इज जनरेटिंग फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट कम्स टू यूजिंग द फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन। Using the financial information, there are certain users of accounts. Earlier it was viewed that accounting is meant for the proprietor or owner of the business, but changing social relationship diluted the earlier thinking. Since the earlier businesses were simple and not scaled, probably that view could hold true for those. It is now believed that besides the owner or management of the business enterprise, users of the accounts include investors, employees, lenders, suppliers, customers, government and other agencies, and the public at a large. Okay, जो भी स्टेक होल्डर्स है, इंटरनल या एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, दे आर ऑल्सो कम अंडर यूजिंग द फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन। पहले क्या होता था, सिर्फ यूजर ओनर्स ऑफ द बिजनेस यूज़ करते थे फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, बट जैसे जैसे चेंजेस हुआ, टाइम में चेंजेस हो गया या जैसे जैसे एवोल्यूशन हो गया अकाउंटिंग में, तो इट इज़ ऑल्सो यूज बाई इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स लाइक एम्प्लॉयज, लेंडर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट एक्सेट्रा. For example, if an airline company borrows money from a bank, buys oil from the oil company, sells tickets to the customers, has staff to be paid salaries to, all these group of people and entities are key stakeholders in that airline business. They would like to know and understand whether the business of the company is going well or there are challenges for the company to run the business. Accounting provides the art of presenting information systematically to the users of accounts. Okay, जो भी एम्प्लॉयज़ है सैलरी ले रहे हैं, या बैंक है जो जिसने कंपनी को लोन दिया है, या गवर्नमेंट है जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है बिजनेस से, और या क्रेडिटर्स है जिसने हमें लोन दिया है, या डेटर्स है जिसको हमने लोन दिया है, ऑल दीज persons are comes under stakeholders. They want to know how the business is performing, they want to know the financial position of the business. So these are the stakeholders of the business and these are the users of financial information or financial statements of the business. Accounting data is more useful if it is stressed economic substance rather than technical form.
Information is useless and meaningless unless it is relevant and material to the user's decision. The information should also be free of any biases. The user should understand not only the financial results depicted by the accounting figures, but also should be able to assess its reliability and compare it with the information about alternative opportunities and the past experience. The owners or the managers of the enterprise, commonly known as internal users, use the accounting information in an analytical manner to take the valuable decisions for the business. So, the information served to them is presented in a manner different to the information presented to the external users. Even the small details which can affect the internal working of the business are given in the management report, while the financial statements presented to the external users contain key information regarding assets, liabilities, and capital, which are summarized in a logical manner that helps them in their respective decision making. तो यहाँ पे ये जानते हैं कि हम लाइक इंटरनल स्टेक होल्डर्स को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंफॉर्मेशन मिलता है वो, एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है वो अलग रहते हैं, बिकॉज इंटरनल स्टेक होल्डर्स को थोड़ा बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा जो जो कि लाइक बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, या जो ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स या जो एक्टिविटी बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है वो भी मैनेजमेंट रिपोर्ट में हम मेंशन करते हैं. ओके, सो एक्सटर्नल यूजर्स को जो रिजल्ट उनको लाइक उनके डिसीजन मेकिंग को like important है, या the result or the information which is important to their business or their decision making, that result only displayed to that external users. Okay, वो वहाँ पे टेक्निकल जार्गन्स का यूज़ नहीं करेंगे. दिस इज़ अ सिंपल लॉजिकल फिनेंशियल स्टेटमेंट जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कैन अंडरस्टैंड, and there will be no technical jargon. The financial statements will be brief and a simple manner. Okay, सो आज के लिए यहाँ तक ही ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे या नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग एज अ सोशल साइंस. एंड आपको अगर अच्छा लगा हो आज का लेक्चर तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो, एंड प्लीज़ mention your queries in the comment section below. I will try to answer all your queries. Thank you for watching. Stay tuned. Tata.